ચાલો આપ સૌના આશીર્વાદથી આજનું આ શૈક્ષણિક કાર્ય આપણે શરૂ કરીએ. જ્ઞાન સેતુ પછી આપણે વિષય ઉપર આગળ વધીએ. તો હિન્દીમાં ઇકાઈ 1 તમારું કાવ્ય છે મેરી હે જમીન મેરા આસમાન. બરાબર, પ્રાર્થના ગીત પણ કહેવાય એને. એ આપણે પહેલાં સાંભળીએ, પછી પૂર્ણ કરવાની છે. ઓકે, પહેલાં સાંભળી જઈએ. तेरी है जमीन कविता. बाल दोस्तों, आज आप जो गीत सुनने वाले हो वह प्रार्थना गीत है. इसे द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है. तो सुनिए, ध्यान से कविता सुनिए. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर. सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर. तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं. तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं. तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर. सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर. तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे. तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे. वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर. सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर. तेरी है ज़मीं. કવિતા સાંભળી, કવિતાનો ગાન પણ એની સાથે આપણે કરવાનું છે. બરાબર, कविता का गान कीजिए. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर. सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर. तेरी मर्जी से
खबर रखना। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है जमीन। હવે એ જ કવિતાને ગાવાની કંઠસ્થ કરી અને પછી ગાવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હા, કવિતાને જોઈને આગળ છે આમાં સમજૂતી છે કે ગાન કરવાનું. बाल दोस्तों, आपने कविता सुनी और समूह गान भी किया, तो चलो अब आप खुद गान करो। તો એમાં સંગીત નહીં હોય, તમારે ગાન કરવાનું છે કવિતામાં એમાં. અને તમને ખાલી લખેલું આવશે. તમે જે ગયા વર્ષે સચેબલ QR કોડ મૂક્યા છે એમાં બધું છે. મોબાઈલમાં સાથે મને બીજો પરિચય એમાં ચારે ચાર આપણી ભાષાઓ છે. ઇંગ્લિશ, હિન્દી, સંસ્કૃત, ગુજરાતી. એક પણ મને નથી. હા, ચાર ભાષાઓ તો તમે તમારી રીતે પણ કરી શકશો. જો નેટવર્ક આવતું હોય સરખું તો. અને પપ્પા જ્યારે ઘરે આવીને મોબાઈલ તમને મળે ત્યારે ઠીક છે, આપણે અહીંયા પણ કરીશું. કાવ્ય લીખી જો કંઠસ્થ થઈ જાય પછી કવિતા લખવાની છે. એમાં કેવી લખવાની એમ પહેલાં કંઠસ્થ કરી દેજો. એકમ કસોટીમાં પણ પૂછાઈ જાય. કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો તો વાંધો ના આવે. બરાબર. કવિતાનું ગાન કર્યું અને કવિતા સમજીએ. કવિતાની સમજૂતી શબ્દાર્થ तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। समझूती। हे भगवान, यह सारी धरती और आसमान तेरा है। तुम बड़े ही दयालु हो। तुम हमें हमेशा क्षमा करना। तुम सभी के हो और हम सब तेरे हैं। हे प्रभु, हमें हमारी भूलों के लिए क्षमा करना। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्मो जा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन। समझूती। हे मालिक, इस दुनिया में हम तुम्हारी मर्जी से आए हैं, अर्थात हमारा इंसान के रूप में जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम अपनी दया भाव वाली दृष्टि हम पर रखना और हम किस हाल में हैं ये हमेशा खबर रखना।
तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। समझुती, हे प्रभु, तुम अगर चाहो तो हमें जीवित रखो और चाहो तो मार डालो। अब आज हम सब तुम्हारे आगे शीश झुकाकर खड़े हैं। हे प्रभु, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम चाहो तो इंसान की हर आफत दूर हो सकती है। દરેક પંક્તિની સમજૂતી આપણે જોઈ. હજી જો એક વખત જોવું હોય તો જોઈ લઈએ. જો એનિમેશનનો એક ફાયદો છે કે ઝડપથી 2 જ મિનિટમાં તમને આખી કવિતાની સમજૂતી આપી દે. જ્યારે શિક્ષક સમજાવે તો કેટલી મિનિટ લાગે? 10-12 મિનિટ લઈ લે, 15 મિનિટ લઈ લે. એનિમેશનમાં આપણે ફરીથી આ કવિતાની સમજૂતી લઈ લઈએ. કાવ્ય પંક્તિ પ્રમાણે જ સમજૂતી છે. तेरी रे जमीन तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान, तारी जमीन છે તારો જ આકાશ, તું બસ મહેરબાન છો. અમે બધા તારા બાળકો છીએ. મારા ઉપર કૃપા બનાવી રાખ. પહેલી પંક્તિની ભાવાર્થ મૂકે અને તમે આત્મામાં આવી તમારી રીતે પણ તમે સમજી શકો છો. છતાં આપણે એક વખત હજી 2 મિનિટમાં એનિમેશન જોઈ લઈએ. तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। समझौती, हे भगवान, यह सारी धरती और आसमान तेरा है। तुम बड़े ही दयालु हो। तुम हमें हमेशा क्षमा करना। तुम सभी के हो और हम सब तेरे हैं। हे प्रभु, हमें हमारी भूलों के लिए क्षमा करना। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्मो जा पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमीन। समझौती, हे मालिक, इस दुनिया में हम तुम्हारी मर्जी से आए हैं, अर्थात हमारा इंसान के रूप में जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम अपनी दया भाव वाली दृष्टि हम पर रखना और हम किस हाल में हैं ये हमेशा खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। समझौती, हे प्रभु, तुम अगर चाहो तो हमें जीवित रखो और चाहो तो मार डालो। अब आज हम सब तुम्हारे आगे शीश झुकाकर खड़े हैं। हे प्रभु, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम चाहो तो इंसान की हर आफत दूर हो सकती है। मित्रों, आपने कविता सुनी भी होगी और गान भी किया होगा, लेकिन अब आपको कविता की रचना करनी है। यहाँ 2 पंक्तियां गाय के बारे में लिखी गई है। अब आपको अपनी समझ के अनुसार अन्य पंक्तियां बनाकर कविता पूर्ण कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय।
दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। आप अच्छी तरह से इससे परिचित हैं। इस चित्र के आधार पर आपको एक छोटी सी कविता बनानी है। तो हो जाओ तैयार और अपनी सोच को बढ़ाओ। जैसे सुबह सुबह सूरज निकलता, सूरज का स्वागत करने फूल खिलता। બીજી કવિતા છે. હા હા નેરી ગયું જરા ગ્લાસ પી ગયો. ભલે. सुबह सुबह सूरज निकलता, सूरज का स्वागत करने फूल खिलता. હવે આ ચિત્ર જોઈને વાર્તા કવિતા બનાવવાની છે. સુબહ એટલે સવારનો વર્ણન છે. તો એમાં ચિત્રમાં તમને શું શું દેખાય છે? તો સુબહ સુબહ सूरज निकलता, तो सूरज જે નીકળે છે એ પંક્તિ આવી ગઈ. सूरज का स्वागत करने फूल खिलता, तो જે ફૂલ ખીલ્યા છે એની પંક્તિ પણ આવી ગઈ. બરાબર. પછી જે ચિત્રમાં દેખાય છે એનું વર્ણન કરવાનું છે. पंछी अपनी नीड़ से निकलता, चौथी पंक्ति એ પણ આવી. निकलता ता वाળો અનુપ્રાસ મળવો જોઈએ. पंछी अपनी नीड़ से निकलता और मछली अपने जल में तैरती. क्यों? પાણી છે તો એમાં મછલી વહ્યા છે. બરાબર. એ રીતે આગળ કવિતા વધી શકે. હવે શબ્દાર્થ. शब्दार्थ બક્ષિસ શું છે? બક્ષિસનો અર્થ થશે ભેટ અથવા ઉપહાર. આપણે કોઈને ગિફ્ટ આપીએ ને એ ભેટ અથવા ઉપહાર. એ હિન્દીમાં ઉપહાર પણ કહેવાય. કોઈનો જન્મદિવસ હોય તો આપણે ભેટ આપીએ. Bluetooth disconnected. ક્ષમા કરના કેમ આવી ગયું? બક્ષિસ એટલે ભેટ અથવા ઉપહાર. માલિક તો એમાં સ્વામી અથવા પછી रहमत रहमत कृपा कृपा એટલે રહેમત रहमत कृपा आफत आफत मुश्किल अथवा संकट આપણે ગુજરાતીમાં મુશ્કેલી કહીએ મહેરબાન મહેરબાન કૃપાળુ અથવા દયાળુ ગુજરાતીમાં દયાળુ કહીએ આપણે जिस्म એટલે શરીર જાન પ્રાણ આટલા નવા શબ્દો તમારા માટે છે निम्नलिखित भाववाही काव्य पंक्तियां लिखिए जो भाव આપેલો છે એ ભાવ અનુસાર કઈ કાવ્ય પંક્તિ ફિટ બેસશે કવિતામાંથી એ લખવાની છે બરાબર हे ईश्वर तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा करके हम पर सदा रखना तो એના માટે બે કાવ્ય પંક્તિઓ બંધ બેસવી છે તો तेरी रहमत से हम सब में ये जिस्मो जहाँ पाए जिस्म એટલે શરીર
विचार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हमें अपनी दया दृष्टि रखना, हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तो तेरी है जमीन टाइटल है हाँ ये अपनी शुरुआत में जी पंक्ति आवे थी तेरी है जमीन तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान बख्शिश भावार्थात प्रमाणे काव्य पंक्ति લખવાનું કદાચ કાવ્ય પંક્તિ આપેલી હોય તો એનો ભાવાર્થ લખવાનો ઊંધો પણ પૂછી શકે બરાબર इकाई कसौटी એટલે ભાષા સજ્જતા इकाई कसौटीમાં પ્રશ્નો જોઈ લે બરાબર એ પ્રમાણેના જવાબ પણ આપણે એની સાથે જોઈ લઈએ प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? जवाब आवશે कवि चाहते हैं कि ईश्वर हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हर एक व्यक्ति के अपराध को क्षमा करे, दुनिया के लोग किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखे। बराबर कवि ईश्वर પાસે શું પ્રાર્થના કરે છે શું માંગે છે તો આ જે પહેલી જે માં આખી કવિતાનો પણ ભાવાર્થ તમે લઈ શકો બરાબર પછી બીજો પ્રશ્ન છે कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं क्यों? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि ईश्वर सब कुछ कर सकता है। इस सारे जग में ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, वह जिसे चाहे उसको जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। बीजो प्रश्न है आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप प्रश्नનો જવાબ વિદ્યાર્થીને આપવાનો રહેશે જો દરેકની પ્રાર્થના અલગ અલગ છે તમે જે પ્રાર્થના ભગવાનની કરો છો રોજ સવારે સાંજે રાત્રે સૂતી વખતે એ પ્રાર્થના તમારી જિંદગીમાં વધશે બરાબર પછી ચોથો પ્રશ્ન પણ એવો જ છે आप प्रार्थना किस समय करते हैं क्यों? कोई સવારના પ્રાર્થના કરે કોઈ રાતના કરે બરાબર તો એ પ્રમાણે તમે જ્યારે પ્રાર્થના કરતા હો કોઈ બિલકુલ પણ ન કરે ત્યારે મુસીબત આવે ત્યારે જ કરે રક્ષા કરે તો એ પ્રમાણે તમે જ્યારે પ્રાર્થના કરતા હો એ પ્રમાણે
मैंने एक वचन છે મેં કવિતા લખી. હવે मैंने एक वचन છે નો બહુવચન થશે हमने कविता लिखी. मैं कविता लिखी, हमें कविता लिखी. मैंने कविता लिखी, हमने कविता लिखी. પછી वह मेरी किताब है. जो ત્યાં પણ એક વચન જ છે मेरी, हमारी નથી ત્યાં. બરાબર. वह मेरी किताब है. તે મારી ચોપડી છે. તે અમારી ચોપડી છે. वह हमारी किताब है. વહની જગ્યાએ શું આવશે? ये. વહનો બહુવચન શું થશે? ये. ये मेरी किताब है. ઓ સોરી, કિતાબ અને કિતાબે એનો બહુવચન કર્યું છે. મેરી ને હમારીનો નથી કર્યું. એટલે કિતાબ તો કિતાબ. बराबर. यह मेरी किताब है, ये मेरी किताबें हैं. किताब है, किताब है. किताब એટલે પુસ્તક અને કિતાબે પુસ્તકો. પછી છે इसे लड्डू दे दो. इसे लड्डू दे दो. જો લડ્ડુનો બહુવચન લડ્ડુ થાય મોસ્ટ ઓફ, છતાંય જોઈ લઈએ. इन्हें लड्डू दे दो છે. બહુવચનમાં લડ્ડુનો લડ્ડુ જ રહેશે, લડ્ડુ જ નહીં થાય. અમુક એવા શબ્દો હશે કે બહુવચન અને એકવચન શબ્દ પછી ચોથો છે यह लड़का है. बहुवचन આવે તો यह અને वह હોય તો ये લાગી જાય. ये लड़की है, वे लड़की हैं. બરાબર. એ લગાડો તે. यह હોય તો જનરલી ये લાગે અને वह હોય તો वे લાગે. આ એકમ કસોટી. ચાલો હવે ભાષા સજ્જતા જોઈએ. दोस्तों, आप शब्दों के वचन परिवर्तन से अवगत है, तो आइए ऐसे कुछ शब्दों के वचन परिवर्तन के शब्दों को सुने और पढ़े. वचन परिवर्तन सुनिए और पढ़िए. लड़का, लड़के. तिथि, तिथियां. तोता, तोते. पंक्ति, पंक्तियां. किताब, किताबें. खिड़की, खिड़कियां. आंख, आंखें. कली, कलियां. बाला, बालाएं. चिड़िया, चिड़िया. જો આ જે શબ્દ છે ચીડિયા, ચીડિયા, હા બહુવચનમાં અહીંયા હતા ઉપર ચંદ્રબિંદી આવશે. આટલો જ ફરક પડે છે. પછી ચીડિયા એના ઉપર ચંદ્રબિંદી કરવાનું ભૂલી જાઓ તો એ ચીડિયાનું ચીડિયા ખોટું આવે. भाषा, भाषाएं. वस्तु, वस्तुएं. वधु, वधुएं. प्रजा, प्रजाजन. જો પ્રજાનું બહુવચન પ્રજાજન, પ્રજાએ નહીં થાય, પ્રજાજન. कवि, कविगण. કવિગણ, કવિ એ નહીં. गौ, गौएं. चूहिया, चूहियां. યા યા આ પણ ચીડિયા ને ચીડિયા જેવો છે. हाँ, तो आपने देखा कि भिन्न भिन्न शब्दों का वचन परिवर्तन भी अलग तरीके से होता है. ऐसा क्यों? तो आइए वचन परिवर्तन के कुछ नियमों की जानकारी प्राप्त करें. જો આ નિયમો યાદ રાખીને શું
કાયમ કામ આવશે. બરાબર? भाषा सज्जता। बाल दोस्तों, आप शब्दों के वचन परिवर्तन से अवगत है, तो आइए ऐसे कुछ शब्दों के वचन परिवर्तन के शब्दों को सुने और पढ़े। वचन परिवर्तन सुनिए और पढ़िए। लड़का, लड़के। तिथि, तिथियां। तोता, तोते। पंक्ति, पंक्तियां। किताब, किताबें। खिड़की, खिड़कियां। आंख, आंखें। कली, कलियां। बाला, बालाएं। चिड़िया, चिड़िया। भाषा, भाषाएं। वस्तु, वस्तुएं। वधु, वधुएं। प्रजा, प्रजाजन। कवि, कविगण। गौ, गौएं। चूहिया, चूहियां। हाँ, तो आपने देखा कि भिन्न भिन्न शब्दों का वचन परिवर्तन भी अलग तरीके से होता है। ऐसा क्यों? तो आइए वचन परिवर्तन के कुछ नियमों की जानकारी प्राप्त करें। सुनिए और पढ़िए। ताला, ताले। कमरा, कमरे। लड़का, लड़के। छाता, छाते। घोड़ा, घोड़े। तोता, बेटा, बेटे। रुपया, रुपए। बाल दोस्तों, इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि हर शब्द के अंत में आ है और ये पुल्लिंग शब्द है। इन्हें आकारांत पुल्लिंग कहा जाता है। ऐसे शब्दों को बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए शब्द के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। ऐसे अन्य शब्द अपनी कॉपी में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आकारांत ताला, त प्लस आ प्लस ल प्लस आ। सुनिए और पढ़िए। જો આકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દ હોય તો એનો એ થાય. પેલો નિયમ એ યાદ રાખવાનો. તાલા, તાલા, તાલે. પછી માલા, તો માલાએ. એ થાય. જો હવે આમાં આકારાંત નથી, છે અકારાંત વાળા છે. રાત, બહન, પિતા, ભેંસ, સ છે, સા નથી. એટલે અકારાંત વાળા કહેવાશે. શું કહેવાશે? અકારાંત વાળા શબ્દો છે. જોઈ લઈએ. रात, रातें। दीवार, दीवारें। बहन, बहनें। અનુસ્વાર આવશે. आंख, आंखें।
किताब किताबें, सड़क सड़कें, भैंस भैंसे, बात बातें। बाल दोस्तों, हाँ, सुना इन शब्दों को? तो बताइए क्या भेद लगा? हाँ, तो इन शब्दों के अंत में अ है और ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ऐसे शब्दों को अकारांत स्त्रीलिंग कहा जाता है। ऐसे शब्दों का बहुवचन करने के लिए अंतिम अ के स्थान पर ए जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकारांत रात इज इक्वल्स टू र प्लस आ प्लस त प्लस अ। રાત આમ બને તો કરાંત આવ્યું ને એક છેલ્લું ર વત્તા આ એટલે રા, ત વત્તા અ એટલે ત, રાત એનું આવ્યું છે અકારાંત સ્ત્રીલિંગમાં જ્યારે બહુવચન કરવું હોય ત્યારે એનું એ બનાવી નાખવું, ઉપર અનુસ્વાર આવે। सुनिए और पढ़िए। लता लताएं, सेवा सेवाएं, कन्या कन्याएं, बालिका बालिकाएं, बाला बालाएं, भाषा भाषाएं, महिला महिलाएं, पाठशाला पाठशालाएं। बाल दोस्तों, इन शब्दों को सुनकर पता चला होगा कि ये तो आकारांत है, हाँ, लेकिन सभी शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए इन्हें आकारांत स्त्रीलिंग कहा जाता है। ऐसे शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ए जोड़ा जाता है। आकारांत कन्या इज इक्वल्स टू क प्लस अ प्लस न प्लस य प्लस आ। આકારાંત પુલ્લિંગ અને આ આકારાંત સ્ત્રીલિંગ, બરાબર? એની પાછળ બહુવચન બનાવવા માટે એ જોડવો પડશે। એ ઈકારાંત ઈકારાંત और अकारांत, जो ई नानो છે ને ई મોટો છે, એ बारे में जानने के लिए आगे के एनिमेशन पर जाइए। सर्ग। बाल दोस्तों, इन शब्दों को सुनिए और समझिए। यहाँ गुण, योग और देश शब्दों के आगे कुछ शब्दांश जोड़कर शब्द बनाए गए हैं। जरा सोचिए वो कौन कौन से शब्दांश हैं? पढ़िए और समझिए। निर प्लस गुण, મોટા છોકરા ને निर्गुण। स प्लस गुण, सगुण। अव प्लस गुण, अवगुण। दुर प्लस गुण, दुर्गुण। मोबाइल में है। हाँ, इनमें आती है सम प्लस योग, संयोग। वी प्लस योग, वियोग। प्र प्लस योग, प्रयोग। उप प्लस योग, उपयोग। स्व प्लस देश, स्वदेश। वी प्लस देश, विदेश। जो હવે આ સ્વ અને વી ને છે ને એ ઉપસર્ગ છે। શું છે? ઉપસર્ગ કહેવાશે। હા, જે આગળ શબ્દની આગળ જે લાગે છે ને, દેશની આગળ સ્વ લાગે છે તો સ્વ છે એ ઉપસર્ગ છે। પછી દેશની આગળ વી લાગે છે તો વી છે એ ઉપસર્ગ છે। જો અહીંયા લાલ અક્ષરે આ ફૂલની પાંખડીમાં બતાવેલા છે ઉપસર્ગ। उप प्लस देश, उपदेश।
अनु प्लस देश, अनुदेश। हाँ तो मित्रों, आपने देखा कि हर एक शब्द के आगे नया शब्दांश जुड़ा है, जैसे कि दूर, निर, स, अव, प्र, सम, वी, उप, स्व और अनु। इन शब्दांशों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ा जाता है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये शब्दांश शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाने वाले ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। आइए ऐसे ही कुछ अन्य उपसर्ग को समझिए। उपसर्ग अर्थ, उदाहरण कभी नहीं, निषेध, अज्ञान, नहीं, अभाव, निषेध, अनपढ़, अनहोनी, अनजान, अनमोल। जो માં અજ્ઞાન, અનમ, અમર, અચૂક, અચૂક એ છે એ ઉપસર્ગ લાગે છે શબ્દો, બરાબર? અને એનો અર્થ શું થશે? તો એટલે કભી નહીં અથવા તો નિષેધ, ના કરવી હોય ત્યારે અથવા તો ત્યારે. અનનો અર્થ શું થશે? અનુ ઉપસર્ગનો અર્થ તો નહીં, અભાવ અને નિષેધ. क बुरा, बुरी, कपूत, ખરાબ જો કોઈ ને આપણે કેવું હોય તો સપૂત અને કપૂત. कु बुरा, बुरी, કુ પણ એના માટે જ વપરાય છે. कुपुत्र, कुसंग, कुकर्म, कुसमय। नी अभाव, नहीं, निकम्मा, नीडर, निठल्ला, निहत्था। पर, पराया, दूसरा, दूसरी पीढ़ी का। परदेश, परलोक, परदादा, परपोता। स सहित, अच्छा, सपूत, सपरिवार, सुविचार, सकाम। अध आधा, अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला। दो बुरा, दोगुना, दुखद, दुबला, दुस्वप्न, दुगुना। बिन बिना, निषेध, बिन बात, बिन ब्याह, बिन मांगे। भर पूरा, ठीक, भरपेट, भरमार, भरपूर, भरचक। चौ चार, चौराहा, चौमासा, चौकोर, चौपाई। तो बाल दोस्तों, अब आप ऐसे ही अन्य शब्द बनाइए और समझिए। मित्रों, आइए इन शब्द और शब्दांशों को पढ़िए और समझिए। આમાં જરા ને બારમાં, 11માં હતા. सर्ग। बाल दोस्तों, इन शब्दों को मित्रों, आइए इन शब्द और शब्दांशों को पढ़िए और समझिए। लड़ प्लस आई, लड़ाई। ચાચા વત્તા ઈ, चाचा प्लस ई,
चाची, પછી ચાચા વત્તા ઈરા તો ચચેરા. चाचा प्लस एरा चचेरा. જો આ આવશે હો. સંધિ જોડો અને સંધિ છોડો. આ સંધિ જોડીએ છીએ આપણે. પછી આ જ શબ્દોની સંધિ છોડવાની પણ આવશે. એ ગુજરાતી. હું તમને दया સમજાવું. प्लस आलू દયાલુ. दयालु. દયા વત્તા વાન. दया प्लस वान दयावान. हाँ, तो आपने देखा कि शब्द के साथ एक शब्दांश जुड़ने पर एक नया शब्द बनता है. यहाँ शब्द के अंत में आई, ई, एरा, आलू, वान जैसे शब्दांश जुड़े हैं. शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करने वाले ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है. आइए ऐसे ही कुछ अन्य प्रत्यय के बारे में जानें. જો પાછળ જોડાય તો પ્રત્યય અને આગળ જોડાય તો ઉપસર્ગ. સમજાણું? આટલું જ યાદ રાખવાનું. આગળ જોડાયેલું હોય શબ્દાંશ તો ઉપસર્ગ, પાછળ જોડાયેલું હોય તો એ પ્રત્યય. ગુજરાતી નું, ની, ના, ને એ બધા પ્રત્યયો. એ રીતે અહીંયા પણ પ્રત્યયોની વાત થાય છે. જુઓ. આ તો આગળ એનિમેશન આપણા પૂરા થાય છે અને પાઠ પણ પૂરું થાય છે. આ તો निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए. तो नदी तो नदियाँ, किताब किताबें, ये तो હવે આવડશે ને. ભાષા સજ્જતામાં વચન પરિવર્તન આપણે જોયું. એક વચનમાંથી બહુવચન બનાવવાનું જોયું. પછી ઉપસર્ગ જોયા અને પ્રત્યય જોયા. બરાબર. પછી વચનવાળા અકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દો, ઈકારાંત, અકારાંત, આકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દો, આકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દો, પછી અકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દો એ જોયા. ત્યારે તમે જ્યારે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જવાબ લખશો ને ત્યારે આ બધા તમને સમજાશે. આમાં વર્કશીટમાં જે આપણે જોયું એનિમેશન એ જ છે. હા, એટલે એ હવે આપણે રિપીટ નથી કરતા. સમય પણ થઈ ગયો છે.